historical aspects. There is something belief which has been associated with this gland, isn't it? And we'll see the physiological anatomy, how the melatonin is getting synthesized. Okay, steps of melatonin synthesis. Then we will see the pathway also. Okay, actions and the pathway of the melatonin secretion. Okay, how the pathway follows when there is light and darkness, isn't it? Please settle down. Settle down first, please. क्या कर रहे हो आप? So we'll discuss then the functions of the pineal gland. So you all know the pineal gland is a very small gland, isn't it? You give little attention to these topics, pineal gland and thymus. बहुत कम पढ़ते हैं इसको, isn't it? But it is a very important gland, isn't it? So it is also called epiphysis, and it is the shape क्या होता है of pine cone. That's why its name pineal gland. छोटा होता है, pine type का होता है. That's why its name. Okay, and where it is situated? It is situated in the midline structure, isn't it? Midline है, midline brain के midline दोनों cerebral hemisphere के बीच में होता है. It is a diencephalon के structure है, and situated deep in the brain, closer to the third ventricle, isn't it? So there are some historical aspects which are attached with this gland. So for centuries it was considered that our body is controlled by God through this gland. Okay, so it was considered the main controlling center of your body. So all the spiritual aspects was associated with this gland. Okay, it was in the western region, it was called the seat of the soul. Okay, seat of the soul. Soul हमें पता नहीं चलता कहाँ पे है. No one knows. But it was earlier it was considered that it was the seat of the soul, which was first told by René Descartes, a French philosopher and scientist, who first told that it is the seat of the soul in 1637. After that, several names was associated with this gland. Spiritual names like it's called God's organ. Okay. So there are certain belief system which was associated, like it was considered the God's organ through which your body is getting controlled. The pineal eye, the third eye, you know, it was also called third eye, because you know directly the eye is getting connections with this gland. And there are, you know, in lower animals there are vestigial, there are third eye also present, you know, the different lower animals like different snakes, it is having third eye also, isn't it? So it is considered the remnants of the third eye, okay, in our body. And in our region, eastern area, it was called the eye of Shiva, Shiva's eye, isn't it? And also in Persian it was called, the Persian name Chashma Batin. Okay, so there are different names which has been associated, and belief system was associated with this gland. So it is, in that way it is very important, and different functions has been attributed to this gland. Apart from the sleep-wake cycle, different functions have been associated, like it is a mood enhancer, okay, enhancing the sex, promoting the sleep, you all know, then anti-infective, longevity. So there are different functions which has been associated, but still it is in research stage. Okay, however, till date, except its role in secretion of melatonin, through that controlling your
internal clock, sleep wake pattern is the, apart from this function, nothing is still established. One more function which is about to be established, you can say it is role in like organ system, okay, reproductive organs, okay. And so the role of pineal in evolutionary progression of mankind, okay, it is still in research. So as we have discussed, small gland, very small in size, millimeter, almost 0.1 gram in weight, okay, but disproportionate to its size, it is having a blood flow इसका ज़्यादा होता है, okay, and it is also considered a circumventricular organ. What does circumventricular organ mean? Circumventricular organ किसको कहते हैं? Nobody knows. Outside the blood-brain barrier, okay, outside the blood-brain barrier, okay, there are different organs which are not having the blood-brain barrier. So it is one of them, and it is in direct contact, you can see, with the third ventricle through a pineal recess. So इसके जो secretions होंगे वो blood में भी जाते हैं और CSF में भी जाते हैं, okay. It pours its secretion in both the areas, and everyone knows that in infancy, in childhood age, its size is larger size का होता है. As the age progresses, its size diminishes, isn't it? Like maximum in 2 years, okay. उसके बाद क्या होता है? Static रहता है up to puberty age, and then it regresses, okay. So it regresses at the time of onset of puberty. जैसे puberty आता है ये regress होना शुरू हो जाता है, maybe due to the hormone, okay, and it receives the sympathetic innervation from the superior cervical ganglion. If you remember, we had read in the autonomic nervous system, the sympathetic, paravertebral ganglion होते हैं जिसको chain ganglion कहते हो, उसमें different regions होते हैं. One of them was the cervical region, उसमें भी cervical, superior cervical, middle cervical, inferior cervical. So it receives its innervation from the sympathetic nervous system by the superior cervical ganglion. वहां से superior cervical ganglion से post ganglionic fibers निकलते हैं, post ganglionic fibers, है ना. autonomic nervous system में पढ़ा है ना, pre ganglionic, post ganglionic. So post ganglionic fibers superior cervical ganglion से निकलने के बाद it goes to the pineal gland, okay, via the beta receptors. वहां पे beta 1 receptor especially, it causes the melatonin secretion there, and also it receives the parasympathetic innervation from these two ganglion, pterygopalatine and otic ganglion, okay. So coming on to the different regions in the pineal gland, histologically you are having these two structures. Main structures are the pinealocytes, okay. pineal cells है, chief cells भी कहते हैं, pinealocytes, ये देखो pinealocytes. Then there are supporting cells, that is called the glial cells or astrocytes, okay. So it is composed of pinealocytes, chief cells, इसमें light type के भी होते हैं, एक dark type के भी होते हैं, okay. So there are different types of pinealocytes. It is majority of the composition of the pineal gland is composed of these pinealocytes. It is 95% around, okay. Then there are supporting cells, glial cells. Then there are other structures as well. There are blood vessels, there are peptides, peptide hormone भी देखा गया, it releases to some extent. So peptidergic neuron like cells, okay. So ये भी cells होते हैं. Then there are interstitial cells, connective tissue will be there. Then there are blood vessels. Then there are macrophage cells as well, perivascular phagocytes जो कर रहे हैं, phagocytic cells भी होते हैं, okay. Perivascular phagocytes are also there. Then there are small calcifications also, calcium crystals, microcalcium crystals, calcareous bodies होते हैं, calcite microcrystals are also has been seen in these areas, okay. So there are number of composition, but the main important is these two cells, pinealocytes and the glial cells.
So as I have told you, pinealocytes, it is comprised of 95% of the cell population. Okay, and these are actually the modified neurons, and you can see here, these are the pinealocytes. न्यूरॉन्स है, इसके टर्मिनल बर्ड्स होंगे, है ना, टर्मिनल बटन्स होंगे, एंड दे प्रोजेक्ट टू द वैस्कुलर एरिया एंड ऑल्सो टू दिस, ये क्या है, वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, तो सीएसएफ को भी दे रहा है और इसको भी दे रहा है, टू एंड फ्रो, है ना, ब्लड से कुछ लेता भी है, isn't it, for the synthesis of the hormone. Okay, so for the transfer of molecules through these terminal birds, they transfer light type and dark type. What are the hormones? You all know the main hormones, that is the melatonin hormone. Everyone knows these hormones. Okay, that it is coming from these pineal glands, and the plasma level in children will be maximum ज़्यादा रहेगा, up to 250 picogram per ml. Then as it reaches the puberty, it regresses and the value decreases to around 1/4, 770 picogram तक आ रहा है. Okay, so and also ये और ज़्यादा elderly होते तो और कम हो जाते, it regresses. So there are, this is the principal hormone, but there are additional hormones which also it secretes, like peptides hormone, GABA, then certain amine hormones. So peptide hormones में like vasopressin, oxytocin, then pre-opiomelanocortin derived, है ना, like ACTH, MSH, है ना, then endorphins, angiotensin 2 से, and gonadotropin releasing like peptides. So there are other peptides also it is releasing. That's why it is told that apart from this function, okay, light dark जो साइकिल है, ओके, सर्कैडियन साइकिल, उसको कंट्रोल करने के अलावा भी इट माइट बी इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ अदर endocrine functions, because it is also releasing some other hormones as well, isn't it, peptide hormones. So melatonin, now coming on to the synthesis of melatonin, how the melatonin is getting synthesized in these pinealocytes. Melatonin chemically is N-acetyl 5-methoxytryptamine. N-acetyl 5-methoxytryptamine. The precursor, the initial originator molecule is the tryptophan, which you take from the outside. Okay, that is the essential amino acid. Okay, so this tryptophan is the main precursor molecule, you can say, and in the parenchymal cells of the pineal gland, जो chief cells है, बीच का जो cells है, majority of the cells, parenchymal cells, वहाँ पे synthesize हो रहा है, वहाँ पे इसके जितने hormones required है, वहाँ पे present है, और बनने के बाद ये blood में और CSF में देगा. So these are the steps of melatonin synthesis. You can see starting from the tryptophan, which you are getting from the diet. Okay, it receives one hydroxyl compound. Hydroxyl compound एक add करता है. Okay, so it will become 5-hydroxytryptophan हो जाएगा, है ना, add हो रहा है एक OH group, hydroxyl group, and after that यहाँ पे hydroxylase enzyme लग रहा है, tryptophan hydroxylase. Okay, I am seeing some of you are talking. I will keep you out from the class. So after receiving one hydroxyl compound, it will release one carbon dioxide. Okay, decarboxylase enzyme लग रहा है, hydroxylation पहले हो रहा है, then decarboxylation हो रहा है, it will release one carbon dioxide, CO2 बाहर आएगा, तो decarboxylation हो रहा है, and it becomes 5-hydroxytryptamine. It will become 5-hydroxytryptamine. That is the very active compound that is called serotonin. हम कहते हैं serotonin is the happy hormone. You all know endorphin, serotonin. These are the happiness hormone. So the serotonin will be formed. From the serotonin, there will be acetylation. Acetyl group add करेगा. In the presence of this very important enzyme,
that is called N-acetyl transferase. Okay, N-acetyl, serotonin N-acetyl transferase भी कहते हैं, serotonin N-acetyl transferase, and this enzyme is the rate limiting enzyme. ये rate limiting enzyme पता है ना? This is the rate limiting enzyme. अगर क्वेश्चन आता है what is the rate limiting enzyme, you have to answer this one. Okay, N-acetyl serotonin N-acetyl transferase. Okay, SNAT. Okay, so the serotonin will be converted to N-acetyl serotonin. These are all happening in the parenchymal cells. Okay, and N-acetylation होगा. First में क्या हुआ? Hydroxylation हुआ. Okay, after that there will be decarboxylation, and after that there will be acetylation, and in the presence of this rate limiting enzyme, and after that there will be methylation. Okay, so methyl group will be added in the presence of this enzyme, HIOMT, hydroxyindole O-methyl transferase. Okay, and it will become melatonin, the active compound which you require. Okay, so the melatonin, that is the N-acetyl 5-hydroxytryptamine, so it will be released into blood or the CSF, isn't it? So these are the steps of the melatonin synthesis, and you can see here that ये dark shaded है ना, dark shaded, you can see dark shaded में क्या होता है, इसका release ज़्यादा हो रहा है, isn't it? Go out, go out. So in the dark stage its release is more. Okay, और ये light में कम हो जाते हैं. So these are the steps of melatonin synthesis. Okay, these are happening in the parenchymal cells. Okay, and this is the rate limiting enzyme. So this melatonin is called the night hormone भी कहते हैं, hormones of the night, darkness hormone भी कहते हैं. Okay, and its release is having a diurnal variation. Diurnal variation मतलब day night 24 hour में variation रहता है. Okay, it is having a remarkable diurnal variation in melatonin secretion. You can see that its release is maximum during the dark stage, 1 to 7 am, 1 pm रात में, जब 1 am to 7 pm. Okay, रात में है ना, इस तरह से it is having a remarkable diurnal variation. And what is the cause? Because this diurnal variation is supposed to be due to the sympathetic discharge, more sympathetic discharge at that stage, okay, which is mediated by this neurotransmitter norepinephrine release कर रहे है ना, via the beta 1 receptors especially. Okay, so we'll see how the pathway of melatonin secretion, जो pathway follow हो रहा है melatonin secretor, वो तो हमने synthesis देखा कि melatonin कैसे synthesize हो रहा है in the presence of various hormones. Okay, and how this melatonin is getting secreted, okay, from the pineal gland in the presence of light. लाइट के टाइम में क्या होगा, इसका सिक्रीशन कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे. सो लाइट कम होगा तो ये पाथवे इनहिबिट हो जाएगा, देयर विल इंक्रीज इन सिक्रीशन. सो व्हाट हैपेंस दैट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, व्हाट हैपेंस, योर रेटिना विल कैप्चर द लाइट, द photosensitive layer in the retina, isn't it? There are ganglion cells, you know, okay, rods and cones as well. The ganglion cells, वो ganglion cells वो क्या करता है, यहाँ से directly ये it will go, it will connect to the which part of your brain? What is the master of the sleep wake cycle? What is the pacemaker of sleep wake cycle? It is called the, it is there in the hypothalamus. Which part of the hypothalamus, which nucleus? You all know, I think. It is the suprachiasmatic nucleus, SCN nucleus. So what happens that through the retinohypothalamic tract, बेटा क्यों, वो बाहर में और भी उसको बुला लो, और भी कोई, अच्छा चलो आ जाओ. So through the retinohypothalamic tract, so it reaches to the circadian clock, your master clock. Okay, master clock, that is the suprachiasmatic nucleus,
Okay, so upon receiving the light, this photosensitive layer in the retina and the ganglion cells of the retina, okay, they will be activated and they will pass on the information to the suprachiasmatic nucleus, master clock. And this suprachiasmatic nucleus, okay, there is another pathway also, that is light pathway. If you remember the visual pathway, ऑप्टिक नर्व बनते हैं, ऑप्टिक काइज्मा होता है, ऑप्टिक काइज्मा के बाद lateral geniculate nucleus आता है. Okay, so also there is another pathway to reach the suprachiasmatic nucleus through the lateral geniculate nucleus. जब आप पढ़ोगे visual pathway वहां पे आप देखोगे, it can also reach to the suprachiasmatic nucleus, but this is the main pathway. Light आया, okay, retina को strike किया, from the retino-hypothalamic tract, this is the retino-hypothalamic tract, retina और hypothalamus connect कर रहे हैं, okay, it reaches to the master clock, okay, master regulator जिसको बोलते हैं, that is the pacemaker of sleep wake cycle, suprachiasmatic nucleus. And that suprachiasmatic nucleus, then that will be activating the paraventricular nucleus, okay, it will reach its information, pass on this information to the paraventricular nucleus, okay, but here यहाँ पे क्या होता है, ये जो कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन्स, दे आर इनहिबिटरी, ओके, ये लाइट, ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स यहाँ पे रिलीज करते हैं, गाबा, ओके, लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, ये एक्टिवेट हो गया, बट पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के जो न्यूरॉन्स है वो इनहिबिट कर देते हैं. सो दिस पाथवे विल बी इनहिबिटेड, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इट विल कनेक्ट टू द डिसेंडिंग फाइबर से वो थोरैसिक इंटरमेडियो-लैटरल हॉर्न of the spinal cord, thoracic area of the sympathetic जो fibers निकल रहे हैं ना वहां से, spinal cord से निकल रहे, intermedio-lateral horn से निकलते हैं, isn't it? If you remember, जो autonomic nervous system के जो pathways हैं, वो spinal cord में जाने के बाद वहां से कहाँ जाएंगे, वो ganglion में जाएंगे, paravertebral ganglion में. If you remember the pre-ganglionic fibers and post-ganglionic fibers, so paraventricular nucleus, then it will inform to the intermedio-lateral horn of the spinal cord, thoracic region, okay, then from there it will activate the, it will reach to the ganglion, है ना, इस तरह से आता है ना, स्पाइनल कॉर्ड है, साथ साथ में क्या चल रहा है, चेन गैंग्लियन जिसको बोलते हो, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन. तो ऊपर से फाइबर्स आए, नीचे गए और वहां से निकल करके इंटरमीडियो-लैटरल हॉर्न से निकल के कहाँ गए, वो ऊपर चले गए, क्रॉस कर गए, 1-2 सेगमेंट्स ऊपर भी चले जाते हैं कुछ फाइबर्स, इफ यू रिमेंबर, वहां जाकर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में ये रिले करते हैं, ओके, एंड दिस फॉर्म्स द प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स. यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के इंटरमीडियो-लैटरल हॉर्न से जो निकल रहे हैं, दैट इज प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, इजंट इट, प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं. अब यहाँ से क्या होता है, इट विल रीच टू द pineal gland. This is the post ganglionic neurons, post ganglionic neurons, समझ में आ रहे? And this pineal gland will release the formation called the secretion of melatonin, okay, so and this melatonin secretion, this is called the sleep wake cycle, and this melatonin secretion, it will control the sleep wake cycle, though it is not though it is called the master clock, pacemaker, but it is controlled by this very important hormone which is released from the pineal gland. ये control हो रहा है, melatonin, suprachiasmatic nucleus is getting regulated by this hormone. Through these receptors, there are melatonin receptors, especially MT1, melatonin 1 receptor and melatonin 2 receptor. Melatonin 1 receptor is very predominant in the suprachiasmatic nucleus and also in the retina also, okay, it is also considered as a regulator, okay, retina भी part करते लेता है. So you can very well analyze that light आया इधर retino-hypothalamic tract के through, ये information किसको गया, suprachiasmatic nucleus, then suprachiasmatic nucleus के neurons activate हो गए, ये activate हुआ तो GABA रिलीज किया, इसको इनहिबिट कर दिया इस पाथवे को,
पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को, इसके न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर दिया, सो दिस विल बी इनहिबिटेड, इनहिबिट हो रहा है ना, ये इनहिबिट हुआ तो यहां से पीनियल ग्लैंड भी इनहिबिट हो गया, पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इट डिक्रीजेस, है ना, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, मेलाटोनिन इज गेटिंग डिक्रीजेस, ओके, सो लिटिल एक्शन विल बी देयर, इजंट इट, डार्कनेस होगा, उसमें क्या होगा, आप एक्टिव फील करोगे लाइट के प्रेजेंस में, स्लीपी फील नहीं करो, मेलाटोनिन क्या करता है, स्लीपनेस हार्मोन है, डार्कनेस हार्मोन, स्लीपी फील कराता है, इजंट इट, सो दिस इज अनदर डायग्राम हियर, यू कैन सी लाइट आया इधर, गैंग्लियन सेल्स, रेटिनल गैंग्लियन सेल्स, गैंग्लियन सेल्स होते हैं रेटिना में, वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, गैंग्लियन सेल्स रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में आया, देन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये इनहिबिटरी हार्मोन है यहाँ पे, ओके, देन हियर यू कैन सी डाउन जा रहा है ये, है ना, ये न्यूरॉन्स जा रहे हैं नीचे, इंटरमीडिएट लैटरल हॉर्न्स में कनेक्ट कर रहे हैं, and from there the preganglionic fibers will arise, isn't it, and from the superior cervical ganglion है ये, यहाँ से pineal gland को जा रहा है, so simple, okay, so in that way the secretion of melatonin is regulated, the day and night, night होगा तो ये जो GABA कम हो जाएंगे और it will increase in secretion, so melatonin receptors, I have told you there are two types of receptors. These are the GPCR, G protein coupled receptors. हमने पढ़ा है G protein में second messengers required होते हैं, G protein में second messengers required होते हैं, अरे खड़े हो जा बेटा, stand up, yes, continuously you are talking, I am seeing you for quite few time, yes. So melatonin 1 and 2 receptors, they are GPCR, G protein coupled receptors. So the G protein coupled receptors में you know there are different second messengers, cyclic MP, GMP, IP3 dark, so so it will work like that, okay. So melatonin 1 receptors is predominantly present in this suprachiasmatic nucleus, and also it is found in the retinal layer, okay, especially the ganglion cells, okay, and it has also been found on the anterior pituitary का जो proximal stalk जो बनाता है, जो anterior pituitary से connect कर रहा है hypothalamus, that is called pars tuberalis, एक distalis होता है बाद वाला, एक intermediate होता है, so tuberalis में इसके receptors देखेंगे, okay, so what happens that जैसे activation of MT1 receptors होते हैं, so it inhibits this adenyl cyclase के through काम कर रही है, okay, so जैसे melatonin MT1 receptors किसके through काम कर रहे हैं, by inhibiting the adenyl cyclase, okay, and it results in sleepiness, समझ में आ रहा है, MT1 रिसेप्टर्स वो सैप्रोकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में काम कर रहे हैं, ओके, वहां पे रिसेप्टर्स है, वो इनहिबिट कर रहा है एडेनाइल साइक्लेस को, वो क्या कर रहा है, स्लीपनेस, ड्राउजीनेस आपको फील करा रहा है, ओके, देन MT2 रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन रेटिना एंड सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, बट प्रिडोमिनेंट वन इज MT1 रिसेप्टर्स, ओके, ये जो पाथवे है MT2 के थ्रू जो काम करता है वो IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट and diacyl glycerol, if you remember this is another pathway of second messenger, okay, and they synchronize the light dark cycle. Now coming on to the functions, so for long you all know this pineal gland has been considered as a vestigial organ, है ना, with no functional importance, though it is very important, you know, so earlier it was supposed that it is having a no functional importance and it degenerates with age के साथ खत्म हो जा रहा है, till 1970 सिर्फ ग्रॉस एनाटॉमी पता था, and also linking it with the spiritual aspects, okay, that it is a God's organ, there is third eye, okay, nothing was associated with it, okay, they were only knowing the gross anatomy and this spiritual aspects, okay, and in fact the scientists are also not very well interested to work on that gland because of that fear, okay, so but in 1958 this scientist, okay, from the USA, that is Aaron B. Lerner, he discovered this melatonin hormone in the pineal extract while he was working at that university in USA, and this functions
Now you all know there are different functions, very important functions which are associated with these organs. Okay, melatonin with the circadian clock, circadian rhythm. What is circadian rhythm? Circadian rhythm is the your biological clock within your body. There is a biological clock. एक तो क्लॉक बाहर में भी होता है जो डे नाइट हो रहा है, हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंगली क्या सिंक्रोनाइज करता है. So you are also having the internal clock that is called the circadian clock, and it is also called the chronobiotic molecule. Chronobiotic molecule मतलब it is regulating the day night cycle. Okay, day night cycle. Chronobiotic molecule इसी के कहते. It is regulating the circadian rhythm, our internal clock. उसको रेगुलेट कर रहा है और सिंक कर रहा है ये आउटसाइड इन्वायरमेंट along with the suprachiasmatic nucleus. So it acts through the receptors, and there is a very important that resetting का काम करता है ना. अगर मेलाटोनिन आपका परफेक्टली काम नहीं कर रहा है, you will feel drowsiness, आपका अनईजी होगा, इरिटेबल होगा, जेट लैग फेनोमेना, यू नो जेट लैग है ना. जो यहाँ से जाते हैं आप बाहर जा रहे हैं, वहाँ का टाइमिंग अलग है, आपका बॉडी यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से सिंक्रोनाइज है, वहाँ जाओगे तो क्या होगा, यू विल नॉट फील गुड फॉर क्वाइट फ्यू मोमेंट, इजंट इट. दैट इज जेट लैग. ओके, ड्यू टू दिस. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन. जैसे अब मेलाटोनिन का सिक्रीशन डार्कनेस में ज्यादा होता है, उस टाइम में टेम्परेचर कम हो जाता है. ओके, सो थर्मो रेगुलेशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस, एंड नाउअडेज this function is also been in fact clearly understood that it is having a role on your genital organs. Okay, reproductive function पे इसका effect है. In fact what happens that it inhibits the gonadotrophic hormones, FSH, LH, isn't it? So it inhibits that hormone. Okay, and it plays a role in the onset of puberty. प्यूबर्टी एक फिक्स टाइम पे आता है. ओके, यू नो उसी टाइम पे आता है. अगर मेलाटोनिन में गड़बड़ तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकता है, अर्ली प्यूबर्टी हो सकता है. ओके, सो इट इनहिबिट्स दैट हार्मोन, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स. सो इनहिबिट्स द अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जिसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं. ओके, सो एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस, व्हाट हैपेंस दैट दिस पीनियल रिग्रेशन स्टार्ट्स. पीनियल रिग्रेशन छोटा होना शुरू हो जाता है under the influence of those hormones, isn't it? And it also regulates the thyroid hormone, the ability of the thyroid hormone. In turn, the gonadotropin releasing hormones पे भी action है इसका. Indirectly through the thyroid hormone. Thyroid hormone is having a effect on the gonadotropin releasing hormone. Do you know that? So what happens that melatonin, it may inhibit the थायराइड हार्मोन का एबिलिटी को रेगुलेट करता है. इन दैट वे इट रेगुलेट द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीशन. सो अल्टीमेटली इट इज आल्सो हैविंग अ फंक्शन ऑफ द योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इजंट इट? रिप्रोडक्टिव फंक्शंस इज. देन इन एनिमल्स इट हैज बीन एसोसिएटेड विथ डिफरेंट सीजनल चेंजेस. एक प्रॉपर सीजन में ही उसका मेटिंग होता है, यू नो. ओके, सो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो एनिमल्स में होते हैं, ओके, उसको भी ये एनिमल्स में ये कंट्रोल करते हैं. ओके, सो सीजनल चेंजेस में मेटिंग हो रहा है, ओके, प्रॉपर सीजन में होता है. ओके, सो इट आल्सो सिंक्रोनाइजेस द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स अकॉर्डिंग टू द सीजनल चेंजेस. इन लोअर एनिमल्स इट इज आल्सो हैविंग सम इन्फ्लुएंस ऑन द मेलानोफोर्स, जो कि स्किन कलर को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन ह्यूमंस में अभी तक ये डिफाइंड नहीं है. So, and also the melatonin therapy has been given. Melatonin therapy आजकल दिया जाता है. Okay, especially in the circadian resetting करना है. Okay, circadian उसका क्लॉक गड़बड़ हो गया, रीसेट करना है, तो उस टाइम में melatonin therapy has been used. Okay, especially in the jet lag which I have told you right now. Okay, and other sleep disorders like, you know, narcolepsy. Do you know that? नार्कोलेप्सी डे टाइम स्लीपनेस होता है, वर्क टाइम में स्लीपनेस हो रहा है, उसका क्या पैटर्न उसका चेंज हो गया, तो उस टाइम में रीसेट करने के लिए देते हैं मेलाटोनिन. ओके, सो इट इज ऑल्सो reported to have a blood anti-hypertensive effect. लेकिन these are all
in research stage. Okay, so melatonin therapy has been reported to lower the blood pressure in hypertensive patients. It is also reported to have some antioxidant property, antioxidant. Okay, depression, antidepressive भी इसको अभी रिसर्च में है, has been reported to improve the major depression disorder and anxiety. Okay, and antioxidant properties has been reported to be associated with this effect. Okay, so there are number of other functions which have been now in research stage, and okay, and it has been associated with this, but not very conclusive. Okay, to have a oncostatic effect भी बोलते है ना, cancers को ये बढ़ने नहीं देता, cancer cells को. Okay, like breast cancer, ovarian cancer. Okay, brain protective effect भी देखा, oxidative. Okay, so therapeutic potential of melatonin, melatonin को different brain degenerative disorders like Alzheimer's disease, Parkinson's disease, इसमें भी try किया जा रहा है. Okay, there are different neurodegenerative disorders in which it may act as an antioxidative agent. Okay, now there is some other important there I have told you there are microcrystals, calcium deposits may be present in the pineal gland. If this calcification increases, इसको हम pineal sand भी कहते हैं. Okay, pineal में sand हो सकता है. Okay, like especially the hydroxyapatite crystals होते हैं, which is there in the bones, you all know. Bones में भी होता है ना, ये main जो mineralization करा रहा है. Okay, so this is also there in this pineal gland, but it is somewhat in different location. Okay, वहाँ पे वो cortex में होता है, ये अंदर में होता है. Okay, so if there is increase in the calcification, melatonin production कम हो जाएगा. So it is higher in, it has been seen that calcification is more in Alzheimer's disease. So ये research का topic है, already research is ongoing, and there is also pineal gland is also the site of fluorosis, fluoride deposition. है ना, देखा ना, टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स आते हैं, उससे भी ज्यादा concentration इसमें होता है, normally present. So if there is excess fluoride deposition, it may also lead to decrease in melatonin secretion. It may affect the melatonin secretion. Little bit about the thymus gland I will discuss. So you all know the thymus is located in which area? The mediastinum, just above the, you can say, the heart, isn't it? Superior mediastinum. So, and it is having lobes, okay, very small organ with two lateral lobes. It was also associated with soul, like pineal gland. Okay, what more was associated with pineal gland? Thumos means soul. For a few centuries was also regarded as the soul residing organ. And you all know the pineal, the thymus is the site of, क्या करता है thymus? It educates your thymus gland. Thymus जो आपका T lymphocytes है, उसको क्या करता है? Mature करता है. ये educate करता है. It is a training center. It is a school for maturation of the T lymphocytes. Okay, वहाँ पे नहीं mature नहीं होगा तो it will not work. Immature रहते हैं. निकलते कहाँ से T lymphocytes? From where it is getting released? From bone marrow, you all know. Okay, bone marrow से which series is going to form this lymphocytes? I will come on to that. Histologically, the thymus has two compartments. एक तो कैप्सूल होता है thymus का, सब कैप्सुलर एरिया होता है, उसके नीचे कॉर्टेक्स होता है ना, ये आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ रहे हो गए आई थिंक. कॉर्टेक्स होता है which is densely packed. Cortex is densely packed and it is having these thymocytes जो कि हार्मोन रिलीज कराते हैं वहां पे, thymocytes. ओके, हैविंग दिस इमैच्योर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वहां पे. टी लिम्फोसाइट्स आते हैं वहां पे इमैच्योर, पहले पेरिफेरी में जाता है. ओके, टी लिम्फोसाइट जो इंटर करते हैं थाइमस में तो पेरिफेरी से स्टार्ट करते हैं, वहां पे इमैच्योर होते हैं, जैसे अंदर जाते हैं वो मैच्योर होते जाते हैं, मैच्योर होकर फिर वहां पर जाते हैं. ओके, सो द cortex and the medulla is having mainly the epithelial cells which are the main training cells, you can say. ये ट्रेन करता है सबसे ज्यादा epithelial cells. वहां पे क्या होता है, different MHC molecules are there. MHC, you know, major histocompatibility complex, है ना, वो अगर मैच प्रॉपर किया तब उसको रखता है वो. ओके, सो medulla is having this
epithelial cells, but वहाँ पे thymocytes कम होते हैं, also contain some concentric corpuscles और Hassel's corpuscles होते हैं, है ना, उसी के along ये आपका T lymphocytes ज़्यादा रहते हैं. So as the age progresses, it decreases in size and weight. Okay, so you can see birth के time में 15 ग्राम है, see maximum जा रहा है puberty में 35 ग्राम, then it diminishes 5 ग्राम, involution हो रहा है. Okay, and it is due to the high level of sex hormones. Sex hormone बढ़ रहा है, adult में तो कम होते हैं, उसके influence में कम हो जाते हैं. So there are different hormones which are released from this thymus gland, like it secretes especially the polypeptide hormone. These are all the polypeptide hormones. Different peptides are associated like thymulin, thymopoietin, thymopentine, thymosins. Thymosins आपको सबको पता है ना? Thymus मतलब thymosin. But there are other hormones as well. Thymulin, thymopoietin, thymopentine. Okay. This thymulin is a zinc dependent hormone. Zinc dependent, nonapeptide, 9 amino acid is associated. Okay. इसका काम क्या होगा? Obviously T cell को मैच्योर करने में हेल्प करेगा, isn't it? Differentiation and modulates the suppression T cell action. T cell different type के होते हैं, you know, cytotoxic होते हैं, helper होते हैं, suppressor होते हैं, memory होते हैं, you all know. Okay, so it also acts as anti-inflammatory, antibody production में help कर रहा है. Then thymopoietin is having 49 amino acids. Polypeptide, obviously ये भी T cell को मैच्योर करने में, डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, इम्यून को रेगुलेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इट अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन. इफ यू रिमेंबर द मायस्थेनिया ग्रेविस याद है ना, वहां पे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है ना, वहां पे क्या हो रहा था? ऑटो एंटीबॉडी जनरेट हो रहे थे ना, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के अलावा, तो वो एंटीबॉडी और कहां से रहते? वो जो मैच्योर हो रहा है टी लिम्फोसाइट, वो सही से मैच्योर नहीं होकर के वहां पे सेल्फ एंटीबॉडी बना दे रहे है ना, उसमें सिलेक्शन होता है, पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन. इफ यू रिमेंबर द मैच्योरेशन, so what happens that there are certain hormones which are associated. Thymopoietin, it affects the neuromuscular transmission. Thymopentine, it will also differentiate the T cell. Thymosins, major thymosins कौन से होते हैं? Thymosin 1 alpha 1 beta 4, different types of thymosins. ये सबका अभी functions still is in research stage. Beta 10, beta 15, beta 4 is associated with angiogenesis. Okay, there are different functions which are associated with thymosins. Okay, epithelial cell migration, endothelial cell को migration करते. Okay, endothelial cell migration, angiogenesis, है ना, blood vessels को formation में help कर रहे. Okay, like there are different stages, you know, वहाँ पे help करता है angiogenesis में, clot formation में help करता है ना, इसका मतलब clotting mechanism भी इसका काम है. It modulates the different interleukins, cytokines, है ना. Obviously the stem cell differentiation, stem cell, you know, stem cell सब निकल रहा है जहाँ से, जैसे that is the stem cell. एक होता है, एक progenitor cell होता है. What is the difference? एक pluripotent cells होते हैं ना, stem cells और progenitor cells, there is difference. These are the same or different? हाँ, stem cell और progenitor एक ही है या different है? हाँ, what is the difference? So you should understand, must understand that progenitor cell अगर differentiate करेगा तो progenitor cell वो रहेगा नहीं, ओके, उसका पुल नहीं होता. स्टेम सेल में क्या होता है, वापस वो उसका अपना पुल मेंटेन करता है, समझ में आ रहा है. तो प्रोजेनेटर सेल इफ इट चेंजेस इनटू अदर सेल, दैट प्रोजेनेटर सेल विल नॉट बी देयर, चेंज हो गया वो. लेकिन स्टेम सेल क्या है, वो वापस वो एक और सेल बनाता है जो उसको रेप्लेनिश करता है. ओके, सो इट विल मेंटेन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, it will maintain the original population. Progenitor cell cannot maintain. Okay, so stem cell differentiation, immune response में help कर रहे हैं. Coming on to the functions, so we have discussed that it helps in maturation of the T lymphocytes. Time हो गया क्या? Still 8 minutes. So development and maturation of the T lymphocytes, it is a training school.
है ना। जैसे आर्मी जो है आपको ट्रेनिंग लेने जाती है स्पेसिफिक जगह, तो वो एक तरह से ट्रेनिंग स्कूल है ये, हाउ टू behave in the battlefield. So it educates the developing immature T lymphocytes by different selection procedure. जैसे आर्मी में भी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, पॉजिटिव सिलेक्शन और निगेटिव सिलेक्शन करते हैं। ओके, इफ यू रिमेंबर द मैच्योरेशन स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन, ओके, ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जाता है वहां पे डिफरेंट प्रोटीन्स रिलीज करता है, लाइक टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर्स, कुछ याद है? टी सेल रिसेप्टर, देयर आर CD4 मॉलिक्यूल्स, CD8 मॉलिक्यूल्स, isn't it? And there are MHC1 and MHC2. तो MHC1 और MHC2 ये मेजर है, ये क्या करते हैं? ये सिलेक्शन करता है। MHC1 और MHC2 के साथ में जो कंपेटेबल हो गया CD4 और CD8 एंड TCR, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। TCR लो एफिनिटी जिसका होता है, और जिसका बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी होता है MHC के साथ, उसको नेगेटिव सिलेक्शन करते हैं। समझ में? नेगेटिव सिलेक्शन मीन्स अगर बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी हो तो क्या होगा, अपने सेल के अकॉर्डिंग को ही वो क्या करेगा, किल करने लगेगा, ऑटो उसको डिजेनरेट करेगा, isn't it? तो जनरेशन ऑफ सेंट्रल टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब नेगेटिव सिलेक्शन कर रहा है। बाकी सेल्स को क्या करता है? पॉजिटिव सिलेक्शन मीन्स जहां पे MHC मॉलिक्यूल और MHC1 एंड 2, CD4 और CD8, ओके, इसके साथ कंबाइन किया, उसको सिलेक्ट करता है, देखता है कि ठीक है, तो उसको वो पॉजिटिवली सिलेक्ट करता है, उसको फर्दर स्टेजिंग के लिए ले जाता है, फर्दर मैच्योरेशन के लिए। ओके, बाकी वो क्या करता है? वो एपोप्टोसिस करके डिजेनरेट कर देता है। ये आपने वहां पे पढ़ा होगा, आई थिंक, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा वापस पढ़ लो, ओके, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग टाइम। एंड आफ्टर दैट पॉजिटिव सिलेक्शन देयर इज नेगेटिव सिलेक्शन। ओके, नेगेटिव सिलेक्शन में क्या करते हैं? अगर ज्यादा उसको इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो क्या करेगा? वो अपने सेल को किल करने लगेगा, तो उसको नेगेटिवली सिलेक्ट करते हो, बाकी को रख लेते हैं। तो लास्टली यू गेट अ मैच्योर T lymphocyte in the form of cytotoxic T cells which are having the CD8 molecules. CD8 molecule फर्स्ट के साथ MHC1 के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज साइटोटॉक्सिक T cells। और हेल्पर T cells कौन होते हैं? जो MHC2 और CD4 के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको हेल्पर T cells में करते हैं। ओके, एंड साइटोटॉक्सिक सेल T cell will kill the viral Laden cells, जो वायरस के साथ जो Laden cells। and there is another class of T cell molecule that is called suppressor T cells, okay, उसमें से differentiate करते हैं। there is also class of memory T cells। so ultimately you are having the educating these T cells how to carry on the fight within the body, isn't it? so thymus और disease के साथ काफी रिलेशन है। thymus में डिफरेंट thymus, it has been seen that neonates, माइस में अगर thymus को हटा देते हैं तो it is prone to for infection obviously। thymus मैच्योर नहीं करेगा, T cell मैच्योर नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, so congenital thymic aplasia has been seen in a disease which is called DGO syndrome, है ना। thymus उसमें डेवलप ही नहीं करता। ओके, एंड हाइपरप्लेजिया हैज बीन सीन इन मायस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो एंटीबॉडी जनरेट कर रहे हैं यहाँ से, दैट्स व्हाई थाइमेक्टोमी उसमें वन ऑफ द ट्रीटमेंट मोडालिटीज, isn't it, if you remember in the myasthenia gravis। so there are different MCQs, you can solve it, I think we have discussed। can you solve it? darkness lead to increased melatonin secretion due to decrease the activity of suprachiasmatic, it is decrease होगा, increase होगा, increase होगा, increasing the activity of serotonin and acetyltransferase, this was the rate limiting enzyme, isn't it? so this will be the answer। okay, melatonin acting on the melatonin 1 receptors, किसके थ्रू काम करता है ये? साइक्लिक एमपी के थ्रू कर रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिफाइसिस, पीनियल ग्लैंड को कहेंगे। सिंपल क्वेश्चन कर दिया, ठीक है।